वेरी गुड मॉर्निंग ऑल द डियर एस्पिरेंट्स। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम ये डिस्कस करेंगे कि जब हिमाचल पब्लिक सर्विस कमीशन हमारे साथ किसी इंटरव्यू की इंटरेक्शन करता है, चाहे वो हमारा हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए हो, चाहे हम एसीएफ के लिए इंटरव्यू करें, किस बोर्ड और पैनल को जब भी हमें इंटरव्यू से रिलेटेड फेस करना पड़ता है, तो जो कमीशन से हमें डिटेल्ड एनालिसिस फॉर्म मिलता है जिसको हम डैफ बोलते हैं, उससे रिलेटेड हाउ टू फिल दैट फॉर्म, कहाँ कहाँ पर हमें क्या प्रिकॉशंस रखने की ज़रूरत है, और डैफ रिलेटेड बेस पर हमें किस तरह के क्वेश्चंस हम इंटरव्यू से पैनल से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिकॉज आपके रिप्लाई के बेसिस पर पैनलिस्ट विल आस्क यू लॉट ऑफ सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस आल्सो, राइट? सो आई होप इट विल बी यूजफुल फॉर यू, बिकॉज एनी टाइम आपके जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का इंटरव्यू शेड्यूल कैन बी अनाउंस, सो बी वेरी पर्टिकुलर एंड केयरफुल while filling up your DAF form. I'll give you the example demonstration of one older DAF. ठीक है, अभी हमारे पास इस रिसेंट उसके कमीशन ने जो है अभी रिलीज नहीं किए हैं, बट एटलीस्ट उससे आपको एक फेयर आइडिया लग जाएगा कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी एक्सपेक्टेड, ताकि एस्पिरेंट्स जो हैं उसी फ्रेम वर्क के अकॉर्डिंगली जो है अपनी प्रिपरेशन जो है वो कर सकती हैं, राइट? सो आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू. Now say, this is like, say, suppose old example of that the basic information, we call it detailed analysis form, it is DAF, right? So for example, let's suppose we write our name, say, let's suppose here I write that myself, you see, Nithi. Yeah? So maybe simultaneously the question which can be expected, though sounds very conventional, very basic, maybe the meaning of your name. What is the significance over here? You know? Or maybe on this particular name, or maybe your date of birth, any event, any significant day which can be related. For example, like somebody born on 8th March, let's say, right? So this can be considered as a International Women Day, and what is the significance, right? So such type of questions, at least you should be prepared about it. Then in this platform, that every time, according to the vacancies and notification, commission will give you the number of the posts, right? And the candidates are supposed to write their order of preference, right? So say suppose you are filling HAS, post in the first preference, and maybe Tehsildar on the second preference, and maybe district treasury officer DTO for the fourth one, and let's assume for BTO it is third, fourth one, right? And maybe fifth is for ETOs. So let's assume, right? Okay. So that means you, while filling up these preferences, the aspirant should be clear in one's mind that why this type of order. They can be asked that let's suppose ये तो यहाँ पर इस present example में नहीं है, लेकिन suppose करो, लेट्स अज्यूम यहाँ पर हमारे पास जो है पुलिस वाला पोस्ट भी हो, है ना, हिमाचल प्रदेश पुलिस सर्विसेज के लिए, एंड एक पर्टिकुलर एस्पिरेंट की सिक्स प्रेफरेंस है. सो बी प्रिपेयर्ड, आप जो प्रेफरेंसेस फिल कर रहे हैं, दे कैन बी आस्क कि व्हाई इट इज़ नॉट योर सेकंड प्रेफरेंस और थर्ड प्रेफरेंस, व्हाई बॉटम अप, व्हाई दिस इज फर्स्ट. सो वन नीड नॉट ब्लफ देम, हमें उनसे जो है जो है झूठ बोलने की या मैनिपुलेट करने की ज़रूरत नहीं है. जो भी आपकी क्लैरिटी, जो भी आपका स्पष्ट इसके पीछे रीज़न है, उसी क्लैरिटी से आपने अपने रीजनिंग को एक्सप्लेन करना है, राइट? तो जब प्रेफरेंसेस फिल कर रहे हैं, या देर आर पीपल हु आर ऑलरेडी इनटू सर्विसेज, जो ऑलरेडी ईटीओ है, जो ऑलरेडी बीटीओ है, नेचुरली वो अपना प्रेफरेंस जो है वो एसटीएमशिप के लिए एचएस का ही फॉर्म फिल करेंगे. सो यू शुड बी वेरी clear about it, right? And all the candidates, please be very careful. द टाइप ऑफ जॉब जो कमीशन आप जिसके लिए हम अप्लाई करते हैं, इंटरव्यू में उससे रिलेटेड का आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर या उस जॉब फाइल से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो आपको वो पता होना चाहिए. फॉर एग्जांपल, लेट्स सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट कि देर आर डिफरेंट पोस्ट रिलेटेड टू SDM, or you say Tehsildar, or you say ETO or BTO, right? ठीक है, तो एटलीस्ट, और समटाइम्स like last year we have even district treasury officer also, we have district employment officer also. So every year it is going to vary, but be very careful कि जो आपकी पोस्ट रिलीज हो रही है, इसका इन पोस्ट का प्रोफाइल क्या रहता है ना, एसटीएम के कोर फंक्शंस क्या होते हैं, राइट? ठीक है.
इस पोस्ट के लेकर आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव हिरार्की क्या रहती है ना? मे बी हिरार्की में यू टॉकिंग अबाउट कि इसमें टॉप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स कौन रहते हैं, इनकी नोडल डिपार्टमेंट क्या, कौन सा डिपार्टमेंट जो है वो फंक्शनल होगा, ये आपको जो है यहाँ पर क्लैरिटी होनी चाहिए। जैसे सपोज यू टॉकिंग अबाउट फ्रॉम रेवेन्यू डिपार्टमेंट टू मिनिस्ट्री, दिस डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज, तो ये हिरार्की रीजन, this आपके उनके functions, what are the functions? तहसीलदार and STM giving this legislative powers, more of regulatory function, right? This is more of revenue collection function. But when you talk about this post of block development officer, more of developmental, function, right? Welfare or implementation of all the government schemes and on the ground realities as a field officer interacting with the local rural people, right? So आपको इसका जो है job profile should be very clear. So while you are filling up these form, so be very particular कि जिस post में आप aspire कर रहे हैं, at least आपको ये मालूम हो कि उस post में उनका एरियाज, उनके फंक्शंस क्या रहते हैं और उनकी अकाउंटेबिलिटी किनको रहती है, राइट? ओके, देन इफ वी टॉक अबाउट ओके परमानेंट एड्रेस, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, यहाँ से आप क्वेश्चन, लेट्स सपोज यू टॉकिंग अबाउट any district. Let's say somebody talking about Kullu district, or you say Una district, any particular district of Himachal state. So naturally, be prepared that your native home districts, a lot of questions you expect from your own district, right? And if you are somebody belonging to Kullu district, let's suppose, and but at present staying in Shimla for some educational commitments or maybe some professional commitment, at present in some other job, so that means जो आपका correspondence address है और जो आपका permanent address है, at least से related आपके पास जो है वो informations जो है clear होनी चाहिए. For example, let me here explain you. Like, when we prepare for this exam, we study it from prelims and mains perspective when we talk about a district profile, right? So somebody belonging to, let's assume here, Kulu district, that means the district profile may be, they will be the panelists, they will ask you the part related to the historical perspective of Kulu district. Like, in the last experience of interview also, there were candidates who were from Sirmaur district. They have been asked this question of history of Sirmaur district, है ना? तो किसी भी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का नंबर वन हिस्टोरिकल perspective, then what is that district famous for, what are the actual strength of that district. Now Kullu famous for, now here variety of examples. Kullu famous for one, not only just international fairs and festivals like Kullu Dashera, right? But Kullu district also famous for trout fishing, right? So this can be one under this part, maybe fisheries, Kullu these days lot of news thanks to Atal Tunnel, right? And of course, sometimes you see even the not only just the economy aspect, the agriculture part, and maybe from the tourism perspective, very very famous town of Manali, right? Okay. So that means you need to cover the comprehensiveness. You need to state that कि बहुत सारे रीजंस हैं. समटाइम्स उस समय हम डिलीवर करते हुए अपने आंसर्स, और आंसर ऐसे हो जाता है इस बार से, हाँ जी ये फेयर्स फेस्टिवल्स के लिए या लोकल डेटीज या अपने एक रिलीजन या रिच कल्चर के लिए फेमस है. तो फेयर फेस्टिवल रिलीजन कल्चर वो एक ही तरफ आ गया आपके इस पार्ट से. बट यदि हम उसको एडमिनिस्ट्रेशन के इकोनॉमिक रेवेन्यू परस्पेक्टिव से एग्जाम्पल दे सकें, तो टूरिज्म के लिए है ना, एंड ऑफ कोर्स फिशरीज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज इट इज इन यूज दैट वेज, राइट? अटल टनल ब्रेकिंग दिस रिकॉर्ड, मेंटेनिंग दिस वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑल्सो. सो ये पार्ट जो है दैट मीन्स यू शुड बी, यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से, राइट? Then maybe what are the challenges of your district? What are the issues related to the maybe the development of your district? है ना? So Kullu is famous for we talking about drug tourism, है ना? And then from Parvati Valley to Kasol to how do you manage it? है ना? Whether it is important, to what extent legalization of this cannabis cultivation will help the government. So I expect a lot of questions related to the challenges besides other common challenges of maybe infrastructure related challenges, or maybe the challenges related to the climate change or the vulnerability
the risk profile, disaster vulnerability of that particular district. So जब आप डिस्ट्रिक्ट को प्रिपेयर करें तो अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपको जो है जो आपका नेटिव प्लेस है आसपास किस चीज़ के लिए फेमस है, करंट किसी न्यूज़ में रहा किसी वजह से, राइट, क्या प्रॉब्लम्स और इश्यूज वहाँ पर फेस हो सकती हैं, एंड यू नो हेयर ऑल्सो बी प्रिपेयर फॉर द हाइपोथेटिकल सिचुएशंस. You know, they say that okay, if you become the you are posted as an STM and you are one of the subdivision of the district, what will be your topmost priorities? You know, what will you do? So expect such type of a situational questions also. You know, how we can better manage crowd, how we can do crowd management, you see, especially when we're talking about then there is huge crowd, huge rush during the फेयर्स एंड फेस्टिवल्स. यू नो हाउ वी एडमिनिस्ट्रेशन जो है कैसे उसको और कन्वीनियंट कर सकते हैं. जस्ट एन एग्जांपल, ऐसे ही सपोज यू नो somebody belonging to Shimla district, so Shimla in news because of or you know relating to the national missions, so as smart city mission, Shimla coming under as Amrut mission also, right? Earlier Shimla was in news because of the water war, water crisis in scarcity, right? And of course from tourism perspective, very famous vis-a-vis the horticulture. Though you have studied, you know all this, but then the such type of question can be expected when we're talking about the economic aspect, right? At the same time, you know, pay attention, you know, in exploring the administrative part of the district also. How many subdivisions are here, right? How many tehsils are here in your district? How many blocks are here in your district? कुछ इससे related कुछ news रही हो, recently कुछ part हुआ हो, जैसे किरौर की बात हुई तो you know landslides की part हुआ. Such type of questions, you know, you can expect from your respective district profile, right? So say suppose aspirants belonging to Solan district, so naturally, you know, expect lot of questions related to industrialization process and you know, Batti Baroti wala, this Nalagarh, this corridor. So, you know, such type of current information has to be updated, right? Then here, you know, in this tag, continuing with the DAF form, you write your name, your address, and all these personal information, your contact, and everything. When it comes to your academic qualification, all right, be very particular that whatever boards we are talking about, you know, whether it is your CBSE board or it is your Himachal board, right? And of course, you know, the university. Let's suppose you're talking about some, maybe it can be Chulani University, it can be Thapar University, any for that matter, XYZ. So we expect a question that okay, if some candidate has maybe cleared maybe BTech or maybe BSc or having any type of technical background, so that means very much question will be that why administration then? Why not technicality? Right? Why not your own field? There are you know there will be aspirants who have completed their post graduation, let's suppose in one particular subject, and they may be already teaching, so they will again say they expect a question teaching experience है आप में already आप post graduation है, you have qualified your maybe UGC net exam also, then why administration? So that means your answers, your you know your explanation, your rationale behind this part कि आपको यहाँ पर जॉब क्यों चाहिए जब आप ऑलरेडी वर्किंग है. There will be aspirants who are already working, maybe private also, you know, they are working in the private sector, right? So they you know, or the who are already in Himachal Administrative Services only. You know, so why do you want to change? Why do you want to, you know, shift by this exam? So such type of question can be expected, and of course, sometimes there are expert members in your panel which will ask you some questions related to the last qualification which you have covered. It can be any question related to your, let's say, electrical engineering, mechanical engineering, just an example, whatever you have studied. So your recent educational qualification, you must revise or brush up the basics about it, right? And then you here you give the details of your family members, all right. This part is very important. If there are you know members related to maybe psychologists are sitting in your panels, so they will focus on your hobbies, right? Mention, you know, limited hobbies. प्लीज़ डोंट हैव दिस इम्प्रेशन कि जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना अच्छा हम उनको इम्प्रेस कर पाएँगे. इसका मतलब हम वो मैसेज जाएगा कि हम बहुत वर्सेटाइल हैं. Keep it very limited. Understand
हॉबी का मतलब सिर्फ आपका इंटरेस्ट नहीं है कि अच्छा ये आपको ये ठीक है, आपका इसमें आप इंटरेस्टेड होते हैं। हॉबी का मतलब है इट इज़ समथिंग लाइक कि जिस जो करने में यू सीक सो मच ऑफ प्लेजर, जो करना आपको बहुत अच्छा लगता है, सो मच सो दैट इट बिकम्स योर पैशन, right? So even if you're writing, talking about, sometimes candidates will write simply music. You have to be very specific while writing your hobby, whether it is playing music or you're talking about simply listening to music, right? And even you were talking about, let's say, singing, right? So please be very specific, which type of music. ऐसे ही there are people who say maybe dancing. You have to be specific which type of dance and be prepared for live demonstration, है ना? पैनलिस्ट आपसे वहाँ पूछ सकते हैं, अच्छा ठीक है, आप कौन सी गाने, somebody talking about okay singing maybe folk songs, तो बी प्रिपेयर्ड। फिर आपको एक गाना तैयार करके जाना पड़ेगा साथ में, वो पूछ सकते हैं आपसे, है ना? यदि आपकी हॉबीज किस पार्ट से है, दीज डेज कैंडिडेट्स राइटिंग से सपोज योगा, सो दैट मीन्स आपको हॉबीज के बारे में, और प्लेइंग गिटार, और मे बी समथिंग प्लेइंग टू स्पोर्ट्स, राइट, ठीक है, और मे बी यू नो मे बी ट्रैवलिंग, सो बी प्रिपेयर लॉट ऑफ क्वेश्चंस। रिसेंटली आपने कौन सी जगह ट्रैवल की है, राइट, ठीक है, दे विल आस्क यू ओके मे बी द टाइप्स ऑफ योगा विच आसन डू यू परफॉर्म, एंड आपकी हॉबीज से रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा यही आएंगे कि ये हॉबीज ने आपको कैसे हेल्प किया है इन योर पर्सनल डेवलपमेंट, इन योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। और ये हॉबीज आपको एडमिनिस्ट्रेशन, आपकी सर्विसेज में, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंसेस में कैसे हेल्प कर सकती हैं, राइट, ठीक है। आप कैसे इन हॉबीज की इनकल्केशन के लिए, सामने वाले को मोटिवेट करने के लिए आप क्या करेंगे, so you should be very clear, maybe somebody in this field, कोई आप पैनल में कोई ऐसे मेंबर हों जिनका ऑलरेडी ये स्पेशलाइज कुछ एरिया हो, उनको मालूम हो से कुकिंग इज द हॉबी और गार्डनिंग इज द हॉबी, और उनको डिटेल में नॉलेज हो, तो इसमें ब्लफ ना करें। लिखने के लिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ राइटिंग की हॉबी ऐसा ना लिखें। आप में भी यू जस्ट राइट रिस्ट्रिक्ट टू वन हॉबी, बट वो लिखें जिसके बारे में आपके पास जो है उसका एक्सपीरियंशियल लेसन भी हो। सिर्फ उसको थ्रेटिकली उसके बारे में सर्च कर लेना, रीड कर लेना, उससे पर्पस सॉल्व नहीं होगा जब तक आप उसको खुद करेंगे नहीं, है ना? तो इस तरह से हॉबीज के सेक्शंस में यू स्पेसिफाई, बट अगेन आई एम्फसाइज प्लीज कीप इट लिमिटेड। डोंट हैव दिस इम्प्रेशन कि ज़्यादा लिखेंगे तो यहीं पर ही हमारी सिलेक्शन जो है वो श्योर है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, राइट? Then your achievements and your failures, and especially they have made in studies. When they say studies, that means आपकी education की journey, not your coaching का journey. तो इस पार्ट में कई बार एस्पिरेंट्स वो लिखते हैं, लेट सपोज वो कहेंगे कि हम एचएस का इस पर्टिकुलर ईयर में मेंस नहीं क्वालिफाई कर पाए थे, दिस वाज अ फेलियर, और वी कुड क्रैक एक्स वाई जेड मे बी सम कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वी वर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी और हम प्रीलिम्स नहीं क्रैक कर पाए, दिस वाज अ फेलियर। ये फेलियर की बात नहीं कर रहे हैं पैनलिस्ट आपसे, ये तो आपकी जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन जर्नी है। इनके लिए स्टडीज़ का मतलब आपका एजुकेशन, फॉर एग्जांपल आप अपनी स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में, यूनिवर्सिटी टाइम में आप कहीं फेल हुए हो, कहीं कंपार्टमेंट आई हो, राइट, ठीक है, तो वो वाला पार्ट यहाँ पर मेंशन करना है। अदरवाइज यदि वो नहीं है तो इट्स परफेक्टली फाइन, वेल एंड गुड, राइट, ठीक है। और आपका अचीवमेंट दैट इज pertaining टू आपको स्टडीज में, मे बी सम स्कॉलरशिप अवार्ड, और यू हैव बीन टॉपर ऑफ द बोर्ड, और मे बी योर टॉप्स ऑफ यूनिवर्सिटी और गोल्ड मेडलिस्ट। सो आपकी जितनी भी यहाँ पर अचीवमेंट्स की जो बात हो रही है वो प्योरली एकेडमिक अचीवमेंट्स की बात हो रही है, बिकॉज इस पॉइंट पे दे हैव स्पेशली मेंशन कि यहाँ पर अचीवमेंट्स हैं, बट वो अचीवमेंट्स आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर हैं और स्पोर्ट्स हैं। एंड बी वेरी पर्टिकुलर, कोशिश करें यहाँ पर जो आप अपनी अचीवमेंट्स मेंशन कर रहे हैं, बिकॉज इफ़ दे कॉल फॉर डॉक्यूमेंटेशन तो आपके पास उससे रिलेटेड जो है क्या हो, सर्टिफिकेट्स हों, सो दैट आप अपने क्लेम को क्या कर सकें, सपोर्ट कर सकें। तो यदि वो आपसे if you are writing कि okay you have excelled in this sports, you have participated in this competition, mention the level of the competition, वो district level पर था, whether it was a state level, whether it was a national level, global international level, and besides sports it can be extracurricular, it can be anything। आपने कहीं रिप्रेजेंट किया हो एज लीडर, आपने कहीं कैंप्स में फ्रॉम एनसीसी, तो एनएसएस, और मे बी
सम या आप मेंबर रहे किसी क्लब के या आपके ड्रामेटिक क्लब और यू पार्टिसिपेटेड इन सम अदर such type of maybe art to speech to such type of activities वो आपने यहाँ पर मेंशन करना है राइट एंड व्हेन यू मेंशन कि yes this part is clear कि places where we have stayed maybe more than 6 months तो जब आप places mention करते हैं let's suppose you mention चंडीगढ़. Okay. So Chandigarh, and here, within bracket, write the duration. Maybe, let's suppose from January 2021 to, let's assume, from March 2022. So you must mention it like this, simply writing that, okay, you have been in Chandigarh, you stayed in Solon also, you were there in Kinnaur also, or maybe any other city, maybe, you're talking about Jaipur or New Delhi. Simply writing them will not solve the purpose. Write it like this 1 2 3 4 places और प्लेस लिखने के बाद जो है आप यहाँ पर प्लीज मेंशन द ड्यूरेशन द टाइम पीरियड राइट and here again on the be prepared mentally that the panelists have every right to ask you कि अच्छा what was the experience आप यहाँ रहे अच्छा आप चंडीगढ़ में 1 साल रहे 1 साल से भी ज़्यादा रहे अब what was your experience क्या सीखा आपने चंडीगढ़ के experiences को आप कैसे एडमिनिस्ट्रेशन में इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं राइट तो जिन प्लेसेस में रहे वो प्लेसेस किस लिए फेमस हैं डस चंडीगढ़ ऑल्सो कम्स अंडर स्मार्ट सिटी और नॉट राइट ठीक है चंडीगढ़ जो है कौन सी स्टेट्स की यूनियन टेरिटरी है तो इट मे साउंड वेरी बेसिक बट जिस जिस जगह पर आप रहे हैं यदि वो एक्सपीरियंसेस है सो बी प्रिपेयर्ड वो आपको उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं राइट एंड यस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर this DAF is self-assessment. That means here you have to talk about your strength, right? Your capabilities, right? Okay, that why you should be selected for this course. That means it can be your strength. Maybe you are a very rational decision maker or your approach is solution oriented, but at the same time, since you belong to the same state, you are very sensitive to the local issues and the problems also and since you are sensitive but at the same time you are emotionally very very balanced right okay? And maybe you have more experience if you are already working so that experience will help you in that so it can be that whatever you are writing व्हाट इफ दे आस्क यू कि आप एक सिचुएशन हमें जो है यहाँ पर डिस्क्राइब कीजिए यू कोट सम एग्जांपल फ्रॉम योर रियल लाइफ जहाँ पर आपने यदि आप क्लेम करें कि आपकी स्ट्रेंथ है पेशेंस आपकी स्ट्रेंथ है या आप सोल्यूशन ओरिएंटेड है या आप बड़े इनोवेटिव हैं अपनी अप्रोच में सो वो आपसे पूछेंगे कि आप बताइए आपने अपने कॉलेज टाइम में यूनिवर्सिटी टाइम में अब तक अपने प्रीवियस यदि आपका कोई जॉब एक्सपीरियंस है उसमें आपने इनोवेशन को कैसे जो है वो यूज़ किया है क्या जानते हैं आप अपनी अपने नेटिव प्लेस के या अपने एरियाज़ के आसपास या स्टेट के लोकल इश्यूज़ के बारे में that way so how your strength will help you to become a better very very efficient administrator राइट और इससे रिलेटेड पैनलिस्ट विल आस्क यू कि एक गुड एडमिनिस्ट्रेटर में एक अच्छे पब्लिक सर्वेंट में अकॉर्डिंग टू यू क्या क्वालिटीज होनी चाहिए if you here claim कि आप में leadership की qualities हैं so please be prepared to quote some example from your real life some situation जहाँ आपने leadership को जो है रिफ्लेक्ट किया हो अपने बिहेवियर में जहाँ आपने लीडर बनकर जो है उस सिचुएशन को जो है वो मैनेज किया हो लीड किया हो एंड ऑफ कोर्स यू हैव योर फॉलोअर्स आल्सो सो वट एवर यू आर राइटिंग जो भी आप अपनी स्ट्रेंथ की बात करें कि आप बहुत इमोशनली बैलेंस हैं आप सेंसिटिव हैं आप सेंसिबल हैं राइट ठीक है और मे बी you are very very forward moving you're open for learning you are very very flexible you can lead the group right ठीक है you are a good speaker you are a good motivator हर चीज़ें जो भी आप यहाँ पर मेंशन करेंगे राइट ठीक है रिलेटेड टू योर रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड मेंशन कि वो आपको एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे हेल्प करेगा एंड देयर आर एस्पिरेंट्स इफ दे आर वर्किंग एंड स्पेशली यदि आपका प्रेजेंट जो डिपार्टमेंट है वर्किंग का वेदर इट इज पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर then be very clear about it that lot of questions will be related to your present job profile right then आपके आपका इंटरव्यू इस पर ज़्यादा फोकस होगा राइट ठीक है आप पब्लिक सेक्टर में है
आप ऑलरेडी जो है, लेट्स सपोज समबडी इज ऑलरेडी तहसील वेलफेयर ऑफिसर, समबडी इज ऑलरेडी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, समबडी इज ऑलरेडी ईटीओ। तो आपका प्रेजेंट पार्ट क्या है, आपके डिपार्टमेंट में क्या चैलेंजेस हैं, आपका अब तक एक्सपीरियंस कैसा रहा है, ये वाले पार्ट आपके प्रेजेंट। समबडी वर्किंग विद द मे बी द अनदर एरियाज ऑफ मे बी electricity or power sector of Himachal government itself. There are aspirants and वर्किंग विद द प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, तो ये पार्ट जो है आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड आपके क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा आएंगे, वन। एंड ऑफ कोर्स आपका यदि प्रीवियस जॉब्स में पार्ट है कि मे बी आप यू वर वर्किंग ऑलरेडी बट देन यू लेफ्ट इट, सो बी वेरी वेरी honest and true about the reasons. Time and again I'm seeing, see, they are people of very very extreme experience, very wise people, experiential people. And the interview is always not about your factual knowledge that has been assessed in your prelims and mains, so in those duration of time, maybe 15-20 minutes or maximum half an hour, उन्होंने क्या असेस करना है, आपका आपका परसोना, आपका कॉन्फिडेंस, आप कॉम्पिटेंट हैं इस जॉब के लिए कि नहीं, राइट, ठीक है। सो उसके असेसमेंट के लिए सिर्फ नॉलेज फैक्टर ही नहीं देखा जाएगा, आप उस समय उनके क्वेश्चंस को कितनी प्रेजेंस ऑफ माइंड से, कितना कामली हैंडल करते हैं, राइट, वो उन्होंने असेस करना है। तो जहाँ पर भी हम उसको हैंकी पैंकी करने की कोशिश करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे, झूठ बोलेंगे, बात घुमाएंगे, इधर से उधर करेंगे, कॉम्प्लिकेट कर देंगे, इससे बेटर है कि हम स्पष्ट रहें, ये एक्सप्लिसिटली अपनी बात बोलें, जो ट्रू और जेन्युइन जो रीजंस हैं, जो ऑनेस्टी है उसके साथ जो है यहाँ पर हमने रीजंस दे दैट मे बी आप you left the job because you were preparing for this exam, or you left the job because you went for some coaching for it, whatever can be the reasons about it, right? एंड देन ये आपकी पर्सनल सिंपल इंफॉर्मेशन आएगी, आपका डेट ऑफ बर्थ एंड ऑफ कोर्स वेदर यू बिलोंग टू सम कैटेगरी और नॉट, और दैट इज द बेसिक्स, राइट। सो दैट मीन्स अल्टीमेटली आपके डैफ फॉर्म का जो मेन आपका जो the panelist will go through it, is your, first of all, आपका native district will be very very important. Then if you are working, तो आपका job profile वो उससे related हो जाएगा, right? And your hobbies, right? तो स्टेट को तो प्रिपेयर करना ही है आपने, है ना। There are aspirants who are outside the state also. So there they be prepared, then they are going to check, they are going to drill you a lot related to your knowledge and to what extent you are updated about Himachal state. And that state information can be from any perspective, from historical perspective to economic perspective to maybe whatever the current issues, whatever the current challenges, ना। And aspirants who are outside the state, remember that they can be asked questions related to कि जो भी national level पर mission schemes और programs चल रहे हैं, if they are integrated with the state level programs or not. For example, यदि national level पर आपके पास aspirational district program है, तो उसकी information state level पर वो कौन से district में है। यदि नेशनल लेवल पर हम स्मार्ट सिटी मिशन की बात कर रहे हैं, तो स्टेट लेवल पर क्या है, या नेशनल लेवल का हमारा कॉन्फ्लिक्ट है, या इंडिया और चाइना का इशू है, राइट, ठीक है। तो उसमें हिमाचल स्टेट के जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं लाइक लाहौल एंड स्पीति एंड किन्नौर, तो वहाँ पर गवर्नमेंट की क्या प्रिपरेशन है, दैट वे। सो बी प्रिपेयर्ड सच टाइप ऑफ लिंकेज क्वेश्चन ऑल्सो. So this was all related to the basic DAF related information. I I think that you will find this information useful. So stay in tune for more such videos related to your preparation and what type of other questions for national level issues from economy to international relations you can expect in your respective interviews, that we will keep you updating for that. So that for the time being, I wish you all the best and good luck for your future endeavors, whatever you achieve. So I feel that it will help you a lot. Thank you so much.